अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा ब्रीफ होगा। ओके, जहाँ से हमने लास्ट टाइम ब्रेक किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम वी वर on OSI model, and we have briefly covered the presence of layers inside the standard. Generally, this is called a protocol stack. Because there are a number of protocols which are working on each layer to facilitate communication and to establish the communication through different services which are provided at each layer. So if we have a brief review again, so upper layers, then next is the transport service layer or the lower layers. So starting from the application layer, it provides a user interface. Primary purpose is to encode the message in the format which is understandable by the machine and communication storage purpose. Next is the presentation layer, which incorporates encoding as well as encryption and compression based on the control information which is coming from the upper layer. Next, moving towards the session layer. Session layer is related with the establishment of session, authentication, permission, and if the session is primarily how much time the session has to be maintained. Then the transport layer, which primarily the error control and the flow control at this point in time. The implementation is in the form of software, whereas on the lower layers, more towards the hardware, whereas the network layer provides the network addressing, which is the IP addressing, where and the layer beneath is provide the physical addressing or MAC address and physical layer error checking, flow control. The last layer is related with the bit stream 010 and then the voltage level, different voltage levels, which present. This is a brief review of all the layers. Then we have a few slides which highlight the same information in a text form. So we will skip that information. But there are some other concepts as well. One concept is called the port concept, which is nothing but a service access point. The concept of port is primarily, for example, we have a web running on port 8080, for example, or on port 80. So together, two things, the IP address and a port number. For example, 8080 for the web or 8000. These two things define what is called a port. And this is primarily used to access any service. For example, HTTPS or HTTP
which we are familiar with the part of the address of any website on the internet. They are using the protocol and with some addressing mechanism. These addresses are in the form of name, for example, cnn.com. This is primarily a name which is familiar with us, but for machine, this is an IP address. So it resolved with the IP address and then it linked to a port which is not shown primarily. So it links to a port, let's say 8080 for web, for example. So any protocol also specifies a port number, and that port number can be also be changed. जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इसको आमतौर पे चेंज कर देते हैं ताकि जो डिफरेंट अटैक्स हैं, सिक्योरिटी अटैक्स हैं, उनको कैटर किया जा सके. इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू एडिशनल लेयर इज सेट टू बी डायरेक्ट, and exchange of data blocks through a port of layers is known as the service access points. And 7 layers are broadly classified into two groups: upper layer and the bottom layers, host layers and the transport layer. जैसे आप इस diagram में देखिए, there are upper layers and there are two layers. Also, there is another model which is called TCP/IP model. Which is primarily 4 or 5 layer model. Some books actually consider it 4 layer model, but some books consider it 5 layers model. This TCP/IP model is more practical model, but conceptually 7 layer OSI model is studied because it contains the TCP/IP inside. जो लेयर्स इसके अंदर मौजूद है वो TCP/IP के अंदर भी मौजूद है. Then there's a concept of PDU, SDU, and header, which we have already gone through in our previous slide. Made a packet form in which there is a header and there is primarily a SDU, service data unit, or data primarily, and then the whole thing is called a PDU, protocol data unit. So on each layer there are multiple headers, and service data unit is also, it become a service data unit, but in fact the service data unit is start from a message जो कि डेटा पेलोड भी कहलाता है. और लास्ट टाइम हमने एक मुकम्मल डायग्राम में इसको सीख लिया था. यहाँ जस्ट उसकी एक डिस्क्रिप्शन आ रही है. Okay, communication exchange of protocol data units. Primarily there is the exchange of protocol data unit between two entities, and there is virtual communication, there is physical communication. जैसे हमने डायग्राम में देखा था, actual communication is the physical, but we can assume the virtual communication as. PDU is an envelope that carries the data inside it. ये हमने एक एनालॉजी भी पढ़ ली थी पोस्टल सर्विस की. Then user data carried inside PDU is known as SDU. PDU के अंदर SDU होता है, and it also contains a header, which is part of PDU, and SDU is extended with that header. And header specifies the control information. For example, if a layer wants to use encryption, okay, if a layer wants to use encryption or compression, then application layer specifies that presentation layer should use the encryption or compression. This is one example. Other layers also have the examples. So this is the primarily the text on protocol, which is nothing but a set of rules. जैसे if then else rules होते हैं. If true, then execute, else execute, task 2, execute task 1, execute task 2. So these type of rules are primarily specified inside the protocols,
and they can be implemented in the hardware, they can be implemented in the software as well. So each layer n entity, so layer is also called entity as well. So an entity functions by using the control information to construct a header along with the SDU to produce a PDU that is sent down to the layer n minus one for further processing. ठीक है, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होती है, लेयर n है, लेयर n minus one है. So this layer creates a header, and that header is attached to the previous header, and then the SDU, which is nothing but the service data unit, and the whole thing is called a PDU, and that PDU is sent to down, and the lower service then give a lower layer then provide a service to the upper layer. So upper layer is service user, and where the lower layer is service provider. This is also a concept. So function of layer n, reception of PDU from layer above n plus one, upper layer से उसमें receive करना है, then deliver it to the pair process, then passing it down to the stack, to the next layer below, and eventually manipulate the data into a suitable form for transmission through the communication channel. थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ये थोड़ा लिखने में, चूँकि लिखने में और डायग्राम में थोड़े से एक डिफरेंस होता है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एंटिटी वन, दिस इज एंटिटी टू, या यूँ समझिए कि कंप्यूटर वन एंड कंप्यूटर टू. सो दिस इज कंप्यूटर वन and this is computer 2. So there are different layers. For example, here we have a layer n plus 1, then we have a layer n, then we have a layer n minus 1. Okay. Similar processes on the other side. So we have layer n plus 1, we have a layer n, and we have a layer n minus 1. So in this way, a similar thing primarily appeared over that side as well. So as you can see, it is not nicely fit. But we can do is more like this, and a line. My just okay. Fine for our. So anything, any message which is over here, and it has to travel through the link and reach ultimately here, has to pass through all these layers and physically on the medium and to the computer 2 and reach to the user 2 or the computer 2 entity at the application layer. So at any time, this message is between these three layers. So each layer add its header to the SDU of the previous layer and then pass it on. Okay. So if I represent it like this, that it contains a header from the previous layer and SDU, the service data unit from the previous layer, and this is primarily comparative, we'll call it a PDU. Okay, so the next layer primarily based on this header layer provide a service, and that and add another header, and for this PDU become an SDU for the next layer, and this process is repeated again and again. So until we get to the last layer. So if I see this on the next layer, that is n minus 1, I have another header which is attached like this.
So this is the condition in layer n, where layer n plus 1 and layer n, and similarly another header is added by the n minus 1. This is, remember, this is minus 1. It is not n is equal to 1, but it is primarily n minus 1. Okay. So in this way, this communication occurs, and this communication occurs virtually from these layers, because the actual message has to go through this layer. Okay. Similarly, for these layers and for these layers and for these layers on these computers, this communication is primarily a what is called a virtual, primarily virtual communication. But the physical path is here, which provide the actual path for the bit string to pass through from computer 1 to computer 2, for example. But in virtually, all layers assume talking to each other, which is then establish a what is called a virtual communication only for understanding. ये सिर्फ हमारी understanding के लिए, and that's it. इससे ज़्यादा नहीं है. Okay, so any information or the message which go from here will reach here, passing through these layers, and every layer has to perform some service or give some service, and then these headers are stripped out, यानी उनको हटा दिया जाता है when the information pass from the lower layer to the upper layer. Remember, this is n minus 1. It is not n is equal to 1. So this is n minus 1. So in this way, all the communication occurs, and this is written in the form of text over here. Now we read this again. Function of layer n, reception of PDU from the layer above. So layer n receives a PDU from the above layer, which is n plus 1, and deliver it to its peer process. Peer process means the process which are on the computer 2, or the process which are running inside, then passing it down to the stack to the next layer below, which is n minus 1, and eventually to manipulate the data into a suitable form for transmission through the communication channel. So primarily it says about 3 layers, n plus 1, n, and n minus 1, and on n there are multiple processes which are running, and these processes are called peer processes, which are running on the same layer. Then segmentation and reassembly to primarily enforce the error and flow control. There is a large. Okay, Varda कुछ पूछना चाह रही है जी बेटा, go ahead. Okay, वर्दा कुछ पूछना चाह रही है जी बेटा, आप पूछें. Okay, Varda has any question? आपने hand raise किया था, so I stop for any question. No answer from Varda. Okay, so we move ahead. I think everything is clear. हमाद आपको समझ में आ रहा है? जी सर आपकी स्क्रीन हट गई है सामने से. स्क्रीन अभी आ जाएगी. ओके, निम्रा आपको समझ में आ रहा है? रोशना आपको समझ में आ रहा है? यस सर. उम्मे हबीबा आपको समझ में आ रहा है? जी सर. ओके, वर्दा आपको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है. ओके, थैंक यू.
Okay, segmentation and reassembly, I'm not going into the details, but segmentation and reassembly deals with primarily with the large messages. So messages may be large enough to fit in one frame or one packet. So it is broken down, broken into multiple messages, multiple segments, segment 1, segment 2, segment 3. And these segments are then reassembled on the other computer to make the complete message. So the function of application layer starts from here, the description. The application layer is the top of the layer 7. It has a human computer interface and it makes direct interaction between user and the application software. For example, doctor generates a prescription, does so by entering the information about patient and drug and sending it off to the pharmacy. This is one example. The entire process as sent by the doctor, as seen by the doctor, is handled by the application layer. Applications such as database entry, word processing, web browser, email, all are handled by the application layer. These are some of the examples. So as a user, we are working with the application layer. Then there's the presentation layer, which is behind the application layer. And it is primarily the context between application layer entities. It supports the application layer on data representation. Primarily, it is also called a data representation layer because the encoding process and compression and encryption, these are some of the processes which are defined here. Its main function is to convert information from human, user-generated with application software into a suitable format so that the computer can process it, and it maps the data to the session protocol data units. So primarily generalized form, it is PDU, but on each layer we can have, it is that layer PDU. Okay, for example, session layer PDU is called session PDU and passed down to the next layer. Different computer type running different operating systems. For example, PC and PDA, they might, mobile devices, they're running Windows, PC running Windows and PDA running Android. So there are many different coding schemes which are used to represent on those systems. So it is the task of presentation layer to convert accordingly. उसको वो किस तरीके से convert करती है. So similarly, the session layer, which nothing but connects the sessions, इसमें हम normally इसको समझते हैं, it establish the connection, it uses the connection, and then it terminates the connection. जिस तरह हम phone call होती है. So it establishes, manages, and terminates the connection. This is the primarily task it is. So there are two types of modes which are supported. One is called simplex and another is called duplex. Simplex is the one-way communication, whereas the duplex is the two-way communication. Simplex is usually used in walkie-talkies, whereas duplex is commonly used in mobile phones. Synchronization may be required for the error recovery services, and this is supported on this layer. Sometimes the session may terminate abruptly, यानी बताए बगैर, or then it again re-established. So this is the function of session layer. जैसे WhatsApp पे आमतौर पर reconnecting और then this is the session layer function. और application layer पर सिर्फ indication आ रही होती है. This is particularly useful for handling a long stream of data, such as transmitting ECG data, and for example, there may be a transmission of the live data as well. हमें कुछ नहीं करना है as a user. This is the task of the layer to do it. Then there's a transport layer, and transport layer as this is a flow and error control layer, flow control and error control, and also it supports the segmentation and reassembly of the large packets. So large message is breakdown into the smaller messages, and the error control is if there is any error in the communication, then either the message is dropped or resent or primarily try to recover that message. There is also a flow control in the form of numbers and in the form of timers. Timers की सूरत में इस तरह होगा कि every packet has a lifetime,
जब वो वायर पे जाएगा तो, और अगर वो उस लाइफ टाइम के अंदर जो है वो पहुंचेगा नहीं और उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो उस वक्त तक थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद दोबारा भेजेंगे उस मैसेज को। और नंबर स्कीम जो है वो यूज होगी टू नंबर द फ्रेम्स, पैकेट्स, और सेगमेंटेशन और रीअसेंबली में भी नंबर्स यूज होंगे। But this is a technical details. We are not going into the technical details. Flow control means the flow of data from one place to another place is controlled in a controlled manner. Okay, it uses the service provided by the underlying network for importing the session layer, and also we can use the quality of service data service at this point in time, because in medical services there are some requirements on the quality of service कि एक पैकेट जो है वो कितने टाइम में दूसरी जगह पर डिलीवर हो जाए, वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितने टाइम फ्रेम में, कितने मिली सेकेंड में ये डिलीवर होना चाहिए। अगर उसे कम में होगा तो देन इट इज द ब्रीच द क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि कुछ सिग्नल इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, so it keeps tracks of the segments and initialize the retransmission whenever it is necessary, so because of the error control, so if there is an error तो वो पूरे का पूरा मैसेज तो डिस्कार्ड नहीं करना, वो सिर्फ वो सेगमेंट डिस्कार्ड करेंगे जिसमें एरर है, और उस सेगमेंट को या तो दोबारा से मंगवाएंगे या फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। Then there is a network layer जो कि IP address हम जानते हैं। IP address is primarily configured on this layer and it then forms the message in the form of packets and transmission over the network. And there is a routing and switching are supported here. So routing is a function which primarily generates the tables which are called routing tables। जो आप अगर कहीं कोई क्रॉस सेक्शन होती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आमतौर पे बोर्ड लगे होते हैं कि अगर आपने इस रास्ते पे जाना है तो इधर चले जाइए, अगर आपने जो है वो फॉर एग्जांपल अगर ये साहब जो है ये इस तरफ जाना चाह रहे हैं तो सो देयर आर सम साइंस बोर्ड्स आर देयर कि आप किस तरफ जाएंगे। सो दिस मेक्स द राउटिंग टेबल्स so to facilitate the flow of packets within the network. So this task is primarily assigned to this layer and this layer will actually then go on. So there is also one thing, जब traffic जैसे jam हो जाता है, so there is a congestion. If large or excessive amount of data travel from one place to another place at a particular instance of time, तो फिर उस सूरत में congestion control will comes up और उसमें कुछ जो सिस्टम्स हैं वो ऑन हो जाते हैं, कुछ सिस्टम ऑफ हो जाते हैं, और किसी जगह पे जो टाइमर्स हैं वो ऑन कर दिए जाते हैं। जिस तरह ये ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो मुख्तलिफ डे के मुख्तलिफ टाइमिंग्स में, डे और नाइट में मुख्तलिफ उनके टाइम्स होते हैं चलने के। Then the data link layer, the functionality is the same as the transport layer, but there is some difference. The difference is that it is primarily implemented in the hardware, and usually we call a MAC address is defined in this layer. Okay, so there is a MAC address. It is also a layer which is used extensively to implement the security. Then the physical layer, which is the last layer, और voltage levels होते हैं इसमें आमतौर पर अगर फाइबर यूज हो तो उस सूरत में LEDs यूज होती हैं, और लाइट डिटेक्शन जो लाइट डिटेक्टर वो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स हैं वो यूज होते हैं। So it is primarily, and their communication schemes like modulation is used for facilitate the communication, but the main in digital form is the 0 and 1s which are on this layer. Then we stop here because start हुआ था तो हमने ये कहा था primarily this will be a brief session today about 30 minutes and inshallah tomorrow we will be completing these slides and few slides from the next lecture as well. जी बेटा आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
हमाद जी बेटा, आपका कोई सवाल है? नो सर। जी निम्रा, आपका कोई सवाल है? नो सर। ओके, रुशना आपका कोई सवाल है? सर सेशन लेयर से एक सवाल था मेरा, ये पूछें। स्लाइड सेशन लेयर की। आपने कहा इसमें दो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है, तो सिंप्लेक्स का जो आपने एग्जांपल दी थी वो दोबारा बताएगा। ये सिक्योरिटी गार्ड जो वॉकी टॉकी यूज करते हैं ना, उसमें वो एक बटन दबाते हैं, उसमें रॉजर करते हैं, वो उसकी एग्जांपल दी थी मैंने। सर ठीक है, आपने वो एग्जांपल दी थी, लेकिन वो भी तो टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, उसमें भी तो सिग्नल आ भी रहा, रिसीव भी कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट भी हो रहा होता है। हाँ, लेकिन एक टाइम में एक ही पर्सन बात कर सकता है। सही, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर से भी एक क्वेश्चन था। सर इसमें सेगमेंट्स का क्या मतलब है, यानी कि पैकेट्स होते हैं क्या इंफॉर्मेशन के, जैसे हमारे पास बिट स्ट्रीम्स होती हैं। अगर आपने कोई बड़ी जैसे वीडियो है यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, तो वीडियो का साइज बहुत बड़ा होता है ना, तो जो कम्युनिकेशन की जो डिवाइसेस होती हैं ना, वो क्या करती हैं, उसको ब्रेक कर लेती हैं, उसके जो है ना वो सेगमेंट कर लेती हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में उसको ब्रेक कर लेती हैं, इस तरह उसके सेगमेंट बन जाते हैं। और फिर वो बजाय कम्युनिकेशन जो है वो क्या कहते हैं करने के, एक पूरी फाइल को भेजने के, वो फिर उसको सेगमेंट वाइज भेजना शुरू कर देती है। यानी पहले एक हिस्सा भेजेंगे, फिर दूसरा हिस्सा भेजेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह आखिर तक वो पूरी वीडियो भेज देंगे। और ऐसा नहीं होगा कि वो एक वीडियो एक स्टार्ट हो और एंड तक जो है वो एक ही पैकेट की सूरत में हो। आमतौर पे अगर ये लेट्स से 50 मेगाबाइट की ये वीडियो है, तो जो नेटवर्क की जो कैपेसिटी होती है वो आमतौर पे 1 के बिट से लेके, यानी 1000 बिट्स से लेके 1500 या 1.5 के बिट्स तक होती है। एक वक्त में इतना बड़ा पैकेट जो है वो आ सकता है ना, जो कि 1500 बिट्स का मैक्सिमम हो सकता है। तो इस चीज को देखते हुए उसके जो है डिफरेंट सेगमेंट्स कर लिए जाते हैं और वो सेगमेंट ट्रेवल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें ना कि अगर एक घर शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, और वो घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें सामान है, तो एक लोडर से नहीं जाता, वो मल्टीपल लोडर से जाता है। एक तो ये एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल ये हो गई कि अगर किसी जगह पे किसी बहुत सारे जैसे एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे जो है वो गाड़ियों ने जाना है, तो एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है जिसमें एयरपोर्ट के तमाम उस पर्टिकुलर प्लेन के तमाम मुसाफिर जो है वो भर के हम नहीं भेज सकते, इतनी बड़ी गाड़ी होती नहीं है। आमतौर पर छोटी गाड़ियां होती हैं जो कि ट्रैवल करती हैं एयरपोर्ट पे भी और इसी तरीके से रोड पे भी। तो लोग जो है वो चंक्स में जा रहे होते हैं। जैसे आगा खान हॉस्पिटल है ना, तो तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग आते हैं और जाते हैं, और हर बंदा अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे जा रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो जिसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं और वो 5000 लोग उसमें बैठ गए और वो चल पड़ी और वापस आ गई। तो आमतौर पे बड़ा जो क्या कहते हैं फाइल होती है ना, उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको सेगमेंट कहते हैं। और दूसरी ठीक है सर। जगह वो पहुंचती है तो फिर उसको रीअसेंबली कहते हैं। ओके रुशना, और आपका कोई सवाल है? नो सर, इट्स क्लियर। ओके, और मैं अबीबा आप पूछे। ओके वर्दा आप पूछे। अरहम आपका कोई सवाल है?
Okay, we stop here and inshallah ta'ala tomorrow will be our next class. उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट, अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो उसमें आप पूछ लीजिए.